अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं महबूब रोगानी और आज वाले लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ वो तमाम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ शेयर कर रहा हूं जो 2021 और 22 ख़ासकर 2022 में तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स में आए हैं। मैंने उस पेपर से एक एक चुन के आप लोगों के साथ इस लेक्चर में इंक्लूड किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Pakistan tested which cruise missile in February 2021? Bawar. When Malala Day is celebrated? 12th July. Pakistan former Prime Minister Imran Khan reached in Moscow for 2 day official visit to Russia on 23rd February 2022. Which famous couple has divorced recently? Tom Brady and Giselle Bundchen. Paris Agreement 2015 relates to climate change. Which country won most medals in Tokyo Olympics 2022? USA. Who was the first Israeli Prime Minister visited United Arab Emirates? Naftali Bennett. What is the name of Boris Johnson's party? Conservative Party. Which country hosted the Asian Summit 2020 via video conferencing? Vietnam. Pakistan's Stock Exchange is controlled by Securities and Exchange Commission of Pakistan. What is the name of Foreign Minister of Spain who visited Pakistan in September 2021? Jose Manuel Albares. Recently, which Arab country withdrawn from OPEC? OPEC oil producing वाले जो countries है मिडल ईस्ट की, उसकी एक ग्रुप है, तो इससे कतर विदड्रॉ हो गया है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान इज अ रिपोर्ट। विच सिटी विल होस्ट एशिया कप 2022? जकार्टा। जकार्टा इंडोनेशिया की एक वो कैपिटल है। NPT stands for Non-Proliferation Treaty. Where in May 2019, the 14th summit of the Organization of Islamic Cooperation was held in Mecca, Saudi Arabia. In February 2021, which state has launched a 10-year space program? Turkey. तुर्की हम उर्दू में कहते हैं। When Taliban took over Kabul, अगस्त 2021 में, याद रखिए ये 30th अगस्त 2021 है। अच्छा, FIFA 2018 shall be hosted by Russia. What is the name of first black woman judge confirmed to USA Supreme Court? Brown Jackson. Who bought Twitter for $44 billion? Elon Musk. When did Russia launch a large-scale invasion of Ukraine? तो ये फरवरी 2022 है। 14 February 2022. Who is the current Chancellor of Germany? Olaf Scholz. When did the current President of the USA, Joe Biden, take oath of the office? 20th January 2021. What is the name of Foreign Minister of Italy who visited Pakistan in September 2021? Liv D. Moev. Who is the present Chief Justice of Pakistan? Justice Umar Ata Bandial. President of Pakistan has conducted a successful test an enhanced range version of indigenously developed cruise missile in December 2021. What is its name? Bawar. In 31st October 2021, China Beijing was again ranked dash in the world poor air quality. None of these options है इसमें. FOIP stands for Freedom of Information and Protection of Privacy. USA killed Quds force chief name कासिम सुलेमानी. कासिम सुलेमानी एक ईरानी आर्मी जनरल था जो USA ने किल किया उधर बशर असद
के ख़िलाफ़ ये कर रहा था ऑपरेशन, तो उसमें मारा गया है। सैयद अली शाह गिलानी डाइड एट द एज ऑफ 92 ईयर्स। अली शाह गिलानी कश्मीर की एक फ्रीडम फाइटर थे या फ्रीडम लीडर थे, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते थे। 92 ईयर्स की एज में वफ़ात पाया है। Turkey operation in 2019 against SDF Syrian Democratic Forces named Operation Peace Spring. The USA focuses completed their withdrawal from Afghanistan on. अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौज कब निकाली, कंप्लीट निकाली? तो ये 30 अगस्त 2021। On Turkey's request, her national name at the United Nations has been changed to Turkey. ये तुर्की से तुर्की को चेंज किया गया है। अच्छा।